So now we are on air. Whatever will be my screen will be live. So now we have to start the interaction with the learners. So hello students. This is the interaction that we are having regarding your de-stressing about the CAT exam. I am Praveen Tyagi. I am teaching for last 23 years and for teaching CAT for last 17 years. I am also an author. So I would like to guide you all people to the best of my abilities so that I can make your day better, make your CAT better. So let my colleague introduce himself to you. Yeah, hello everyone. I am Parikshit, your Quants and LRDI expert on the Unacademy platform, right? So I have over 7 years of teaching experience, and I was an aspirant myself several years back, way back in 2012. And now, right now, we can feel how you are going through this phase, right? Last 7 days to the CAT, and I'm sure a lot of things going on in your mind, a lot of uneasiness, and there probably is some sort of uneasiness, and that's what we're going to try in this session. Calm that you're calm, right? That calmness is very important so that you do well. So a lot of tricks that Praveen sir and I will share over the period of next few minutes, and I'm sure that you're going to find them useful. थैंक यू सर फॉर योर इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और जहां जरूरी होगा वहां हम नोट्स भी बनाएंगे नोट्स बनाकर आपको लिख के देंगे पॉइंट्स तो अभी पहली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं सर जैसे कैट का एग्जाम आता है आपने भी आप बता रहे हैं आपने कैट दिया है मैंने भी दिया था मैंने सीरियसली पहली बार 2001 में दिया था काफी पुरानी बात है तो 20 साल पहले मैंने दिया था सो देन आई वाज फीलिंग द सेम थिंग दैट यू आर फेसिंग मतलब जो आप लोग फील कर रहे हैं मेरे साथ क्या हुआ था गाइस मेरे को नींद नहीं आई थी एक रात पहले मैंने सोचा था कि मैं बढ़िया से सो के जाऊंगा फ्रेश माइंड से जाऊंगा फ्रेश माइंड से पेपर देना चाहिए और मैंने बहुत कोशिश करी सोया ही नहीं रात को 2 बज गए 3 बज गए मेरे को नींद ही नहीं आई और सुबह मेरे को 6-7 बजे उठना था तो मैं उठ गया और एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से नहीं कर पाया बढ़िया से पेपर गया वहां पर भी थोड़ी हैवीनेस थी माइंड उतना फ्रेश नहीं था सो आई कुड नॉट परफॉर्म वेल इन कैट वो तो पहले अटेम्प्ट में मेरे साथ यही हुआ था कोई इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी हमारे टाइम पर जितनी आज के टाइम पे आप लोगों के पास है तो मतलब 2001 पेपर बेस्ड टेस्ट था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कम थे ऑनलाइन चीजें तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल थी मतलब बट ठीक है फिर भी मतलब मेरा सेम डे कैट था और पहले ये था कि गाइस कैट और स्नैप सेम डेट पर होते थे टाइम अलग अलग होता था तो सेम डे में मैंने कैट खराब कर दिया था और सेम डे में मैंने स्नैप अच्छा कर दिया था सो गाइस द एंजाइटी एंड स्ट्रेस यू आर फीलिंग कैन कॉस्ट यू और कैट कैन कॉस्ट यू 1 ईयर तो आपको बहुत ध्यान देना है इस बात पे कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल आपका एग्जाम खराब कर पाए सो डोंट लेस योर स्ट्रेस ओवर पावर यू डोंट लेस योर स्ट्रेस possess you don't let your stress harm you in any sort of way so stress is really harmful and anxiety eagerness मतलब ये आपको ना एक नॉर्मल दिन की तरह बिताना है बस आप फ्रेश होने चाहिए है ना फ्रेश होने का मतलब है वो तो हम रोज होते ही हैं बस सुबह उठकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है तो हम फ्रेश होंगे ही होंगे राइट गाइस सो ये पहली चीज है सर जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं कैट देने गया था क्या परीक्षित सर आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए सर आपका कैसा रहा था Yes, so Praveen sir, as you correctly pointed out, right, I would definitely tell that for all of you, right, especially the morning aspirants, a good night of sleep is very, very, very important. I can't stress more how important is the sleep factor. Believe me, if you don't sleep well, okay, your brain will not be at its maximum efficiency. And no matter how well you have prepared, how well you have tried, right, these last few months, that one night can make a difference. And remember, the CAT happens only once a year.
if it were to go bad, or if it were to go as not per your expectations, you'll have to wait for one more year to rewrite it again. So definitely make sure that you have a proper night's sleep. Now, when I say proper night's sleep, there are things obviously which are out of your control, right? It could be a lot of things are going on your mind and you are not able to sleep that night. So definitely what I would suggest is that specific day, right? Do things that you actually love to do. Probably the 28th is just a day before the finale, right? The great 29th, and 28th is the day we are all talking about. 28th, do things that you love. Probably you go out, watch a movie, spend some time with your friends. And if you think that your brain is overstressed, okay, do not have, I would suggest rather, do not sleep in the afternoon, okay? Do not sleep in the afternoon. If required, on the 27th night, if you were to sleep for 8 hours, that night sleep for 6 or 8. When you actually fall and lie down in your bed, you actually have a good night's sleep. That's very, very, very important. The second thing that I would want to suggest is, I definitely stress on sleep, but especially if you are in the morning batch, right? The first slot in the CAT, remember that you need to reach your center well before the time. You definitely do not want any last minute hiccups. You definitely do not want to quarrel with the invigilator and make sure, and then probably have an argument. And even if it is a small argument, you know what? That swings your mood. And if you do not want anything which swings your mood at the last moment, so definitely have a good night's sleep. Ensure that you know at what time you actually need to leave your home so that you reach the center well. And when I say well, well in advance. Now here I would definitely like to stress on one thing, right? As Praveen sir correctly pointed out, the pressure. Remember, CAT is just like one more exam. Some of you, or I mean most of you at least, are graduates at this point of time. Or it could be you are in your final year of graduation. Now, if you are in your final year of graduation, or if you have already graduated, right, you have already written a lot of exams. Trust me, when you wrote the class 10 exam, your parents must have told you, beta, ye exam de do acha se aur zindagi ban jayega. 10. 12, they must have told you the same thing. Zindagi ban jayega, ye exam acha se de do. Then came the graduation. And you know that there is an exam every time after you give the current exam, right? So CAT is just gonna be one more exam. You do not have to stress yourself. It's not the end of the world. And even if you were to be dying to do an MBA, this next academic calendar, you know, the calendar had just started. The calendar for exams have just started. So you have a lot of exams coming after that. So make sure that you don't take unnecessary pressure. Otherwise, the pressure itself would cause a hindrance to you scoring well in your exam. So keep that in mind, right? चलिए सर, आपने बहुत Yeah, hello everyone. I see a lot of comments. Yeah. Wonderful insights from your side. So it's been a pleasure, students. आप लोगों के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सर से इंसाइट्स अच्छी कि क्या क्या करना है. पेरेंट्स वाली बात तो खास तौर पे बढ़िया लगी कि पेरेंट्स हमेशा ये बोलते रहे हैं ना कि बस ये वाला एग्जाम और दे दो बढ़िया से, इसके बाद लाइफ सेट. तो हुआ क्या कि अभी तक लाइफ सेट नहीं हुई है, एग्जाम दिए जा रहे हैं. राइट गाइस, पर ये सच में इस वाले के बाद सच में लाइफ सेट है गाइस. पेरेंट्स नहीं, हम भी बोल रहे हैं ये वाला ठीक से दे दो. राइट गाइस, बट अगेन स्ट्रेस नहीं लेना है गाइस. देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोलॉजिकल साइकिल. तो अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को एडजस्ट करो. इसको एडजस्ट करने में आपको 1 वीक लग सकता है. कुछ लोग 3 दिन में या 4 दिन में भी कर लेते हैं. आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, राइट? अब देखो होता क्या है, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं. मेरी भी 2 तरह की स्लीप साइकिल्स हैं. कभी कभी तो मैं सुबह 6 बजे उठने वाला मोड में रहता हूँ, 5 बजे, 5:30, 6 बजे, और उठकर एक्सरसाइज करनी और ये करना है और वो करना है ना. और कभी कभी मेरा मोड ऐसा हो जाता है कि मैं 7 बजे से पहले उठ ही नहीं पाता, 7, 7:30 उठ पाता हूँ. तो गाइज आई ऑल्सो स्टे इन डिफरेंट मोड्स. बट मुझे मोड स्विच करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए होता है कि आज तो उठूंगा ही, कुछ भी हो जाए. तो डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, 1 दिन का नहीं, लगातार 4-5 दिन का.
और 4-5 दिन में वो एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। सो गाइज इफ यू वांट टू अलाउ योर बॉडी, अपनी हैबिट बना लो जल्दी उठना, राइट? तो अभी अब आज से शुरू करोगे तो हो जाएगा, अभी टाइम है ना हमारे पास। तो 5-6 दिन में आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, रोज सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी आपको, राइट गाइस? अगर आप एग्जाम वाले दिन ही सुबह उठोगे या 1-2 दिन पहले ही उठोगे, हो सकता है गाइस आपका सर भारी रहे, आपको नींद ना आए, आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, सब हो सकता है गाइस। बट अगर आपने अपना बायोलॉजिकल साइकिल एडजस्ट कर लिया, और ना केवल सोना गाइस, खाना पीना भी तो बायोलॉजिकल साइकिल है। क्या आप सुबह 6 बजे उठकर बढ़िया हैवी नाश्ता कर सकते हो? 2 पराठे, मक्खन, है ना दही, बढ़िया नाश्ता कर सकते हो सुबह उठ के 6 बजे? मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर सुबह उठ के तो कुछ खाने का ही मन नहीं करता, और बिना खाए इस साल कैट में चले मत जाना। क्यों? एनर्जी चाहिए। 2 घंटे आपके ब्रेन को लगातार काम करना है, हाई स्पीड पे काम करना है, सो यू नीड एनर्जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मील फॉर यू विल बी योर ब्रेकफास्ट, है ना? तो ब्रेकफास्ट को जल्दी करने की आदत भी डालनी है, सुबह उठने की आदत भी डालनी है, नहाने की भी आदत डालनी है सुबह। अब ये बताओ, कैट वाले दिन सुबह नहा के जाओगे या बिना नहाए जाओगे? अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ। सो मैक्स अंदर लोग बोलेंगे हाँ यार नहा के जाऊंगा, कमाल है ना? तो अभी तो आदत नहीं है सुबह 5 बजे नहाने की, है ना? डाल लो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बायोलॉजिकल साइकिल। कब सोना है, कब उठना है, कब नाश्ता करना है, कब नहाना है ना? और गाइस उस टाइम पर पढ़ने की भी आदत और एनर्जी होनी चाहिए। सो गाइस यू नीड टू हैव अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हैवी ब्रेकफास्ट नहीं बोल रहा हूँ, हेल्दी ब्रेकफास्ट बोल रहा हूँ, है, दोबारा बोलूंगा, मगर एनर्जेटिक भी होना चाहिए। नट्स और ड्राई फ्रूट से बना हुआ कोई भी ब्रेकफास्ट अगर होगा तो इट विल बी हाईली एनर्जेटिक फॉर फ्यू आवर्स। देखो सोचो, आपने 6 बजे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपको खाने को कब मिलेगा? आप एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे 11 बजे, है ना? तो हो सकता है कि 6 बजे ब्रेकफास्ट करो, एग्जाम सेंटर के बीच में ही पेट में चूहे दौड़ने लगे होता है ना गाइस? तो वो नहीं करने देना अपने को। अगर आप 6 बजे उठ के नाश्ता कर लिया आपने, तो आपको दोबारा खाना मिलेगा शायद 11-12 बजे टाइप्स, और इवन लेट देन दैट, ठीक है? तो पहली एडवाइस है कि आप 6 बजे नाश्ता करने की हैबिट डालो। दूसरा एडवाइस ये है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप 7:30 AM के आसपास जाएंगे, तो एग्जाम से सेंटर में घुसने से पहले एक हाई एनर्जी चीज खानी है, ठीक है? मैं लड्डू खाता हूं भीम भी लड्डू खाता है, मैं भी लड्डू खाता हूं। आपकी चॉइस है, आप क्या खा सकते हैं? आप कोई भी स्वीट ले सकते हैं, जलेबी, दे रहा हो हाई एनर्जेटिक, रसगुल्ला, जलेबी, कुछ भी, है ना? और गाइज कॉफी ले सकते हैं, कॉफी इज ऑल्सो हाईली एनर्जेटिक एंड सेंसिटाइजिंग, राइट गाइज? तो वो क्या होगा, जो इंस्टेंट एनर्जी आपने 7:30 पे ली होगी, दैट एनर्जी इज गोइंग टू लास्ट एटलीस्ट टिल 10:30, राइट? सो इट मीन्स दैट देर आर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि तुमने एनर्जी लिया हुआ है, तुम डी एनर्जाइज नहीं फील करोगे। अच्छा, हमें लगता है कि सर हमारा बिना खाए काम चल जाता है। गाइज आपको मालूम है कि आपकी बॉडी की 20% एनर्जी आपका ब्रेन यूज करता है? ये बात कोई सोचता ही नहीं है। अरे 20% ले जाता है इतना सा दिमाग? यस गाइस, 20% एनर्जी आपका ब्रेन यूज करता है, और जिस वक्त आप कैट दे रहे होंगे, आपका ब्रेन आई थिंक 30-40% एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। 30-40% ऑफ द होल बॉडी। हार्ट चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, लंग्स के लिए एनर्जी चाहिए, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एनर्जी चाहिए, पर 30-40% एनर्जी कहां जा रही होगी? मे बी ज्यादा भी ब्रेन में। तो अगर एनर्जी कम पड़ गई तो ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी, और ब्रेन आपको बॉडी में नेगेटिव सिग्नल दे सकता है। नेगेटिव सिग्नल कैसे हैं? बस हो गया और नहीं हो रहा, है ना? ये नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं गाइस, एंड दे कम, हमें नहीं पता लगेगा कि वो क्यों आ रहे हैं। एक्चुअली वो भूख की वजह से आ रहे होंगे, बिकॉज आपने खाना नहीं खाया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
मस्त सा खाना खा के जाना है 6 बजे, और 7:30 बजे घुसने से पहले भी कुछ खाना है, और ब्रेन को मस्त एनर्जी देनी है ताकि वो जबरदस्त परफॉर्म करता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, है ना। एग्जाम के बीच में नहीं रुकना, बस वो 2 घंटे चल जाए बढ़िया से। यही चाहिए हमको। सो गाइस, वो हमको करना है, और इस बार करना है तो क्या करना है, अभी से काम शुरू कर दो। चेंज योर बायोलॉजिकल साइकिल। और जो आपका एग्जाम का टाइम है ना, उसी टाइम पर टेस्ट या रिवीजन या पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सो यू विल से ना, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी कम होगा। तुम्हें पता है कि मुझे जो मैं रोज कर रहा हूं वही मुझे उस दिन भी करना है। सो गाइस, स्ट्रेस लेवल विल कम डाउन बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, राइट गाइस। सो दीज आर माई फ्यू वर्ड्स फॉर द एग्जाम डे। बाकी परीक्षित सर भी कुछ लाइट डालेंगे एग्जाम डे के ऊपर। सो परीक्षित सर, प्लीज add your valuable inputs on the exam day tips कि उस दिन क्या क्या चीजें ध्यान रखें। Correct. Yeah, very well said, Praveen sir. I mean, you pointed out a lot of things: what to eat and how to sleep, and you stressed on that factor already, right? Now, I'm going to stress on one part which you've already touched, but I'm just going to stress on that. I think that's very, very important. Now, probably you or I, you know what? A lot of us like to study early morning. Okay, some of you who are in hostels probably would like to stay late night and then study, right? But then these last 6 days, today is a Sunday and next Sunday by this time, you would have actually been done with your CAT. So we are just 6 days. We are just talking about 5 to 6 days. Though I do not stress on mocks at this point of time, I'm not saying you write a mock, but you definitely make it a habit to study for 2 continuous hours, okay, during the exact time slot when your exam is scheduled. If it is a morning slot, make it a habit, okay? Every morning for the next 6 days, exact same time slot, I am going to wake up, I am going to make sure that I study non-stop for the next 3 hours, for the next 2 hours. Now, why do I say so? A, as Praveen sir correctly pointed out, the biological cycle of your body, right? I mean, that's something which has actually been held right by research. There's a lot of evidence to it that your body needs to adapt. And what happens is, a lot of times, especially people who are working, okay, academics who are already studying, probably you are used to sitting for long hours and studying, giving mocks. That's something you are already used to it. You are used to sitting in classrooms. But talk about people who have done their graduation some years back, or probably are doing some amount of work experience, right? What happens to them? They are not used to sit for 2 continuous hours. Now, the last thing you definitely don't want at this point of time is the last section of your exam going bad. Why? Because you are not able to concentrate, you lost energy midway, or the plot was lost in between. That should not happen. Hence, it is very, very, very important that these last 6 days, you study continuously for minimum 2 hours in the same time slot as your exam. That's point number 1 that I overemphasize, and Praveen sir already touched upon it by emphasizing it once again. The second point is, yeah, obviously Praveen sir mentioned about some good things that you wanted to have, okay? I would also stress, yes, definitely do that, but I would like to bring in one more point here. You might think that's a funny factor, but you know what? You might not be allowed to take a bio break in between, okay? A bio break, you just might not be allowed. If you have a medical condition which requires a bio break, you need to have a valid certificate. Now, I'm not saying you will definitely not be allowed, but that depends on the invigilator. Now, you definitely do not want to drink a lot of water, or probably would want to not go to visit the washroom just before your exam, right? Otherwise, trust me, at the end of let's say the first hour, right? You feel like going to the washroom. You might not be allowed. And that should not be a reason that the last 1 hour did not go well because I felt like going to the washroom. See, these are very minute things at this point of time. But trust me, the last 7-8 years that I've been teaching, I've come across such reasons where people say that my exam did not go well because the last 1 hour I felt like going to the washroom and I was not allowed. There were even other instances. Let me point out, you might find it funny, but very small factors. You know what? Often, bells are not allowed. You'll be asked to remove your bells.
Now, I had a incident probably a couple of years back when there was a guy who was really good in quants. He told me, my quants did not go well. And I was like, what happened? He said, like, they asked me to remove my belts. And you know what? My pants were very loose and I was very uncomfortable sitting there. So you also need to be wearing something which is very convenient. Probably the indoor AC would be running. So if you actually feel cold in the ACs, you are one such person, make sure that you actually wear clothes which are actually convenient and comfortable. That is very, very, very important at this point. Second, I would like to stress, probably there are a lot of comments and there was a couple of questions that I saw. One question was, sir, slot 1, slot 2, you are doing a comparison and you are telling me slot 2 may or slot 3, you feel that questions are tougher. Trust me, these questions are picked up by an algorithm, okay? It's picked up by an algorithm and it is never designed and meant to be in such a way that slot 2 is tougher than slot 1 or slot 3 is tougher than slot 1 and vice versa. If you have any such thought in mind, just let it go. These are irrelevant thoughts just 6 days before your exam. The difficulty level, what the computer selects, right, is not in your hands. So you don't have to bother about it. That's point 2. I saw one more question where you said that, okay, your graduation is 90%, 10, 12, and you have 60%. Okay, you might have a lot of cases. But you know what? That would vary from college to college. You need to look at the individual weightage that each college assigns to your 10 marks, 12 marks, and your graduation marks. Some colleges like IIM Shillong would give you a higher weightage to your ACATs. In that case, that's the case. If you are scoring well in your graduation, but remember, grads is history. You cannot go back and change it.